exercise 12A, question 1. Find the simple strengths and the amount when. Principal equals to 6,400, rate equals to 6%, PA and the time equals to 12 years. Let me do the sum. First question. Principal equals to rupees 6,400, rate is equals to 6% PA and time is equals to 2 years. Okay, let's first we find SI, means simple interest. So SI equals to P into R into T by 100 is equals to, we put a value 6,400 into 6 into 2 by 100. Here 0 cut. Okay, let's 64, 6 into 12, 6 into 2 equals to 12. Clear? If we multiply it, we get rupees 768. Let be found amount. Amount is equals to principal plus interest. Principal plus interest is equals to, we put a value on the formula 6400 plus 768, then equals to rupees 7168, means 7,168. That we get answer. Check also in the answer sheet. This will a right answer. All the sums are like that, so we don't do any. Let's the second question. Find the time when principal equals to 6,400, rate equals to 1,152, SI or rate equals to 6% PA. So let's start question number 6. Let's start question number 6. What's the question? प्रिंसिपल को हम शॉर्ट फॉर्म में P कहते हैं. सो P इज इक्वल्स टू रुपीज 6400. SI सिंपल इंटरेस्ट को हम SI भी कहते हैं. SI इक्वल्स टू रुपीज 1152 एंड rate equals to 6% PA and rate equals to 6% PA. That is the question. So let me solve it. The formula of time, we find the time. So the formula of time is equals to SI into 100 by P into R. But to find the time, we also find our SI. So first we find SI. SI is equals to A minus P is equals to 6450 minus 5,000. If we solve it, the answer we get is 1450. So next SI निकल गया. उसके बाद टाइम हम निकालेंगे. फॉर्मूला इज गिवन हियर. सो we put a value 1450 into 100
भाई एस बी इंटू आर होता है 5000 इंटू 12। लेट्स भी सिंप्लीफाई इट। 0 कटिंग 0 से 0 कट 0 0 कट 12 5 से भी कट हो जाएगा से कैसे 5 से कट होगा 29 टाइम देन 29 विद 12 ईयर्स आ गया आपका। आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या है इसका निकलेगा 2 years 5 months। अगर आपने सिर्फ 29/2 ईयर 12 ईयर्स लिख रखा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको कन्वर्ट कर देंगे 2 years 5 months में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे ही आंसर गलत नहीं हो सकता 2 और 9। ठीक है, अब नेक्स्ट भी क्वेश्चन हमने टाइम्स के सारे क्वेश्चन सेम है ये वाले। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्वेरी है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके, देन वी हैव फाइंड द रेट। अब हमें इससे फाइंड करना है रेट को। अब रेट फाइंड करने का पहला 9th क्वेश्चन, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 8250, SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 1100 and time equals to 2 years. Let me do this question. Question number 9. Equals to rupees 8250, SI equals to rupees 1100 and time equals to 2 years। हमें क्या निकालना है? पहले हमें रेट का फॉर्मूला होता है रेट R equals to rate, the formula rate equals to formula of rate SI into 100 by P into SI equals to 1100 into 100, P equals to 8250 and time equals to 2 years। Let me correct 0 का 0 इससे 5 से 5 1s 5 6 7 8 3 5 6 30 2 है 5 5 25 5 2 10। ठीक है, अब 2 से 2 तो कट गया, तो बच्चा 100 165। आई नो दैट कि ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। करेंगे 5 2 10 1 2 10 5 5 5 3 15 1 5 3 15। ओके 39 4 20 to 20 by 33। Then we solve it. Let's check the answer. Exercise 12 question 9. Let's check your answer. Okay, 2 2 4. Let me answer it. We can simplify it. You can simplify it by yourself for a practice.
This is an answer, but can you simplify it? You can simplify it here also. Next question we have. I will see. Next question is equals to same. 10 question is same like that, but 11 is also same. Let's we do question number 12. Let me do question number 12. Question number 12 is Shanta borrowed rupees 6,000 from the State Bank of India for 3 years, 8 months at 12% per annum. By what will clear off her debt? Let me do this question. Here a principal equals to rupees 6,000 equals to rupees 6,000 and टाइम है हमारा 3 years 8 months 3 years 8 months टाइम है हमारा इतना इक्वल टू 3 years 8 months इक्वल टू हम 3 plus 8 by 123 year हम इसे कन्वर्ट कर देंगे ईयर्स में, तो 123 ईयर्स. लेट मी सॉल्व इट. 4 5 6 8 फिर 2 बार कट जाएगा. 2 by 3 इक्वल 2 by 3 year 2 एक सेकेंड 2 by 3 year equals to 11 by 3 year. We can put proper fraction year. 2 by 3 year. Rate equals to 12%. Interest is equals to P into R into T by 100. इक्वल्स टू 6,000 इंटू ये जो हमने किया था 3 + 8/3 ये हम सिर्फ कर रहे थे ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए. अब इट्स अ मेन क्वेश्चन. 6,000 by 12 इंटू 11 by 100. 3 नीचे ट्रांसफर है, नीचे 3 नीचे है, सो 100 इंटू 3. हम इसे कट करेंगे. 6,000 के 2 0 कट, 100 के भी 2 0 कट. 3 4 × 12 4 into 11 240. 60 into 4 into 11 60 equal to 40 into 11 is equals to 2640. Let me find the amount is equals to amount equals to amount she has to give for clear her debt clear her debt equals to amount का फॉर्मूला हम सब जानते हैं. P plus I means principal plus interest. So 6,000
plus 26,640. If we add it, so we get answer rupees 8,640,640. There is no query. I thought it has a no query, so ask me in comment. So our next question. Is to Harry borrowed 18 rupees of money lender. The quote of God. 12 question is also like that. 11 question. So we do. 1 second. 13 is also like that. So we do 14 question. 12 questions. 12 and 13 question is similar to the 11 question. So we do 14 question. Let's question of the 14 is the simple interest on a certain sum for 3 years at 10% annum is rupees 829.50. Find the sum. Let's we do the sum. We do the sum 14. Question number 14. क्लियर है ना आपको कि 11 क्वेश्चन 12 और 13 एक जैसे हैं, सिमिलर है 12, 13, 11 के. अगर आपको ये करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं. आई हैव नो प्रॉब्लम. ओके, सो लेट वी डू. लेट द सम बी एक्स. ये अल्टरनेटिव फॉर्मूला है, अल्टरनेटिव मेथड है. लेट द सम बी एक्स. t इक्वल्स टू टाइम हमें कितना दिया है, t इज इक्वल्स टू 3 ईयर. t इज इक्वल्स टू 3 ईयर. r इक्वल्स टू 10%. रेट हमें दिया है 10%. इंटरेस्ट कितना दिया हमें, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू रुपीज 829.50. ठीक है, पॉइंट तो पढ़ना आते ही होगा. पॉइंट से पहले नंबर को हम उसमें नहीं कर पढ़ते, कॉन्सेप्ट में सिंपल सा नंबर बोलते हैं. इंटरेस्ट क्लियर. इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला I इक्वल्स टू PE इंटू R इंटू T. इसमें इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है, बाय 100. 200 इज इक्वल्स टू 829.50 इंटू x plus 10 into 3. x plus 10 into 3 by कितना आप बताइए 100. सिंपल बात है, by 100. अब लेट सॉल्व इट. एक कट 0 0 already cut 0 0. So x is equals to 829.50 into 10 by 3 equals to, इसको सॉल्व करेंगे, 8,295 by 3 कट होगा, ये आएगा 2, 3 से कट होगा 2765. ठीक है. Its answer equal x is equals to 2765 equals to answer. ठीक है. Question number 14 is that. What is the 15th question? The sum when recorded and it is a similar to the 14th question. So with the 16th question. 16th question is also main question
and that's not tough if you practice it. The question: a sum of money put in 11% annum amounts of 4,491 in 2 years, 3 months. What will amount in 3 years at the same rate? It's an easy question, but it's so long. It's a long. So we done it. 15 is similar to 14. So you done it. If you any questioning me and query, so you ask with me. Question number 16 we done. 16. Let the sum be x. Let the sum को हम x मान के चलेंगे. Let the sum be x. अमाउंट कितनी है हमारे पास? अमाउंट है 4491 रुपीज. 491. रेट कितना है अब पे? रेट इक्वल्स टू 11%. टाइप कितना है? 2 year 5 months. 2 year 5 months. टाइम जो हमारा ये दे रखा है 2 year 5 months, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें ईयर में. कन्वर्ट करेंगे. 2 + 3/12 4 इक्वल्स टू 2/1/4 इक्वल टू 9/4 ईयर. क्लियर? ठीक है, ये तो हमने चेंज किया. अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे. I is equals to A minus P, amount minus principal. Put a value 4491 minus X. ठीक है? X. I is equals to P into R into T by 100. R into T by 100. So we put a value on next page. So we put a value. I P into R into T by 100 equal 4491 minus X equals to X plus 11 into 9 4 into 100. 400 equal to 4491 minus X equals to 99 X. 99 is equals to 99x. So 17,96400. If we solve it, we get it now minus 400. If we solve it, we get it now, and if minus 400, no. 400x is equals to 99x. It's equation like that. So 696 लेंगे मुझसे. 1796 400 equals to 9x plus 400x. X equals to 1796 400 by 499. If we solve it, we get 3600. For second case, ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया. सेकेंड केस के लिए हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट इक्वल्स टू P into R into T by 100 is equals to P600. We put this value here. P600 into 11 into 3 by 100. We got the zeros. But if we multiply that with that, we get rupees 1188. Amount we get, amount is equals to P plus I equals to 3600 plus 1188 is equals to rupees 478.
amount we get answer. Lastly we get answer 4,788. You have not a query. If you have a query, I hope that there is no query. It is easy sum. So 17 question is similar to this question. Let's we do question number 18. Remember, I don't do similar questions because it's for your practice. I give you a hints, but not the whole answer. So if you don't give an answer, not find an answer, let ask with me. I give you answer. Question number 18. At what rate percent per annum will rupees 3,600 amount to rupees 4,734 in 3/1/2 years? ठीक है, अब 18 क्वेश्चन हम करेंगे. 18 क्वेश्चन करने के लिए 18 क्वेश्चन इज नॉट टफ, इट्स सो इजी. अमाउंट कितनी है हम पे? रुपीज 4,734. प्रिंसिपल कितना है हम पे? रुपीज 3,600. टाइम कितना है हम पे? 3/1/2 ईयर्स. टाइम को हम यहीं इसको इन प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 7/2 ईयर्स. कन्वर्ट करना जरूरी है, ऐसा सम हो ही नहीं पाएगा. एस आई इक्वल्स टू कितना होता है? आई और एस आई मीन्स सेम है, 8 माइनस बी. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू वैल्यू रख देंगे 4,734 माइनस रुपीज 3,600 रखते हमने वैल्यू. इफ वी सॉल्व इट वी गेट रुपीज 1,134. SI is equals to P into R into T. फॉर्मूला ये है, is equals to 100 by 1,134 equals to वैल्यू रख देंगे 100 into R into T होता है बाय 100 होता है. ढंग से वैल्यू रख देते हैं, मुझसे गलती हो गई. 100 इंटू आर क्या है हमारा? फर्स्ट दैट्स ऑल इट. 1,134 इतना आर इंटू टी 2 into 100. सॉरी 2 into 100. कट इट. हम इसे फर्स्टली सॉल्व करेंगे. सॉल्व इट. सॉल्व कट इफ वी कट इट 162 then 18. Okay then R is equals to 1,134 by 18 into 7. सब कट जाएगा, आ जाएगा रेट इक्वल्स टू 9%. रेट निकालना था, सिंपल सा रेट का यही फॉर्मूला है 9%. 19 question is similar to the 18. 19 is similar to the 18. So we do a 20 question. In what time will rupees 5,600 amount to rupees 6,720 at 8% per annum? Clear? That we do the sum. Question number 20. Amount is equals to rupees 6,720 and principal is equals to rupees 5,600. Rate is equals to 8%. Time हमें निकालना है, so we do that.
Okay, SI equal A minus B. We get a value, put a value 756 okay, that we solve it, so we get 1120. In the next page we do SI equals to P into R into T. It's a main formula, so you have learned it formula. It's so main formula. You have learned it. Then we put a value 1 into 0 equals to 5600 into 8 into time. टाइम है नहीं, हमें 10 निकालना है. 560 इंटू 100 काटेंगे, कट जाएगा, कट गया. सिंपल सा. जो 10 बार जाएगा लो इक्वल्स टू, और ये कितने बच जाएगा 5 2 2 4 2 8 16. सॉल्व करेंगे हम इसे तो कितना आएगा 1120 बाय 56 इंटू 8. नहीं ये वैल्यू जो है ये कटेगी नहीं, सिमिलर रहेगी. ये आ जाएगा, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तब यहाँ ये कटेगा. ठीक, ये सब कट जाएंगे यहाँ पे. तब हमारा नेक्स्ट आंसर आएगा 10 माइनस 4 t इक्वल्स टू 45/2 इक्वल्स टू 212 ईयर्स. एक और बार आप इसको क्लियर कर लीजिए. देखिए, फर्स्ट पे अमाउंट इज इतना, प्रिंसिपल जो है रेट का टाइम निकाला है. SI इक्वल्स टू A माइनस P. If we put a value, so we get this answer. So then we get a formula to our entity. We get it. It's a similar. Only 2 zeros are cut. Here 2 zeros are cut. There 10. Here is all cut. Here is all cut. There these are not cutted. These are not cutted. Time equal 1120 into 56 into 8, that we get the time equals to it. We simplify it. If you have any query in this question, you find, because there are some mistakes here. Okay, some mistakes होता है. Question number 21 is similar. That's question. So all questions similar, so that question are similar. We can do 22 question. It's also a main question. It come in exam compulsory. A sum of money lends a simple interest amount to rupees 7,883 in 2 years and to rupees 837 in 3 years. Find the sum and rate percent per annum. Let me do. Question 22. A1 equals to rupees 783. T1 equals to rupees 2 years. A2 equals to rupees 873 and T2 equals to rupees 3 years, equal to year 3 years. SI1 equal A1 minus B. SI equal 783 minus B. SI2 equals to 82 minus B. SI equals to A2 minus SI equals to A2 minus P.
equal to 82 minus p. SI2 equals to 873 minus p. SI1 equal to p into r into t by 100. That's 783 minus p equals to p into r into t into r into t. तो हम पे है ही, हम लिख देते हैं इसमें t2 by 100. ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे, ठीक है. क्वेश्चन 1 SI2 equals to P into R into T. 2 into R into T by delta 100. Okay. So 873 equals to 93 minus P is equals to P into R into 3 by 100. Equation 2. Let's, हमने इक्वेशंस लिखी थी. इक्वेशन 1 डिवाइडेड इक्वेशन 2. So 783 minus P by 837 minus P is equal to P into R into 2 by 100 by R into 3 by 100. कटा 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 कट इक्वल 783 minus P by 837 minus P 2 by 3. ये बचा 2 by 3 बच चुका है. इक्वल 783 minus P by 837 minus P multiply 2 by 3. Okay. हम निकालेंगे A 783 minus P equals to 2 bracket 837 minus P the 2349 minus 3P equal 1674 minus 2P minus 3P plus 2P equal 1674 minus 2349 minus कटेगा P equal to minus plus 675 P equals to rupees 675 to rupees 675 783 minus P equals to P into R into T. Okay, by 100. So 783 minus 675 equals to 675 into R into 2 by 100 equals to 108 into 100 square to 675 into R into T. So R is equals to 1900 into 100 by 675 into 2. If we cut it, we get 8%. देखिए clear. We show you cuttings. इसको कट करेंगे.
155 cut 27 cut 2 1 4 20 cut so then the period so 24 and 25 is similar to the sum similar to a question number 22. So we finish exercise number 12A. Exercise number 12B is MCQs. So MCQs are always similar to the questions. So you can do any query, you can ask with me. Please subscribe my channel. Please subscribe my channel YouTube. It's my first video. Please click the bell icon and give me a like and comment. You can comment me and tell me any query. आप मुझे कमेंट करें और मुझसे कोई भी क्वेश्चन में आपको क्वेरी लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरा फर्स्ट चैनल है तो मुझे आगे बढ़ने के लिए डंडा दे। थैंक्स।